इसलिए कॉर्नोपेस्टी नहीं हो सकती। कॉर्निया की ओपेसिटी हो तो प्यूपल तो नजर नहीं आएगा। प्यूपल आ रहा नजर इसलिए कॉर्नोपेस्टी नहीं है। माइनस क्या है? इसमें भी प्यूपल वाइट हो जाता है। इंक्रीज ये पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है कैटरेक्ट, इसमें इन्फेक्शन ऑफ द विट्रियस हो जाता है and the vitreous shows through the pupil as whitish. उसमें भी ग्रे वाइट कलर हो सकता है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि इस आंख में किसी किस्म की कोई सर्जरी की या वो पेन की कोई कंप्लेन नहीं। इमेच्योर कैटरेक्ट हो सकता है कि नहीं? यस हो सकता है। हाइपरमेच्योर कैटरेक्ट, मेच्योर कैटरेक्ट, can it be retinoblastoma? Retinoblastoma हो सकता है इसको? क्यों? रेटिना Because this is a tumor of the childhood and the patient is 65 years. ये नहीं हो सकता। इन तीनों में फाइट है। इमेच्योर कैटरेक्ट है, हाइपरमेच्योर कैटरेक्ट है, क्योंकि कैटरेक्ट आपने कहा था इन तीनों में से कौन सा है? आपने एक को चूज करना है। You are not allowed to choose one. इनमें से कौन सा है? ग्रे स्ट्राइप ये हो रहे हैं ओके, इमेच्योर कैटरेक्ट का आंसर हाँ। कैटरेक्ट को हम डिटेल में कैटरेक्ट कहते हैं कि जिंदगी है तो कैटरेक्ट आएगा। आप परसेंटेज देख रहे हैं कि 60 की एज तक 66% लोगों को कैटरेक्ट शुरू हो चुका है और 90 की 70 की एज तक 90 to 95% लोगों को कैटरेक्ट शुरू हो चुका है, चाहे कम हो या ज्यादा हो, चाहे पेरिफेरी में हो, सब कैप्सुलर हो, वर्टिकल हो, कोई भी हो। Most of the time senile cataract is stage में इतने परसेंट लोगों को हो चुका होता है and usually it is bilateral and physiological changes ऐसी आती हैं जिसकी वजह से cataract शुरू हो जाता है। Whatever the main cause is for this senile cataract formation, ये दो लफ्ज याद रखने की जरूरत है यहाँ। You may be asked the pathophysiology of the senile cataract. एक बात तो आपको पता चल गई है कि senile age होगी, age. But what's happening underneath? दो लेंस के हिसाब से दो चीजें। एक ये है कि when you look at the lens, this is the capsule.